Assalamu alaikum. I am Dr. Ifra Dawood, cataract and NTA segment surgeon at Kashmir Eye Hospitals. Today, I am going to tell you about 10 healthy eye habits which will help you protect your vision. So, to begin with, the first is regular eye checkups. It is recommended that we should have an eye checkup at least once a year so that अगर आपकी आंखों में कोई भी problem हो, that can be detected early and can be taken care of. Second is wearing sunglasses. जैसे कि आपको पता है these days it's very hot और बहुत ज़्यादा धूप है. धूप में UVA and UVB radiations होती है which can be harmful for your eyes. So what you should do, जब भी आप बाहर जाए अपने UV protective sunglasses पहन के ही जाए. Third is to avoid smoking. Smoking is a risk factor for a lot of diseases as we already know, चाहे वो ocular diseases हो या extraocular diseases हो. Smoking acts as a risk factor for cataract formation, for macular degeneration. So please do avoid smoking. Fourth is maintaining healthy eating habits. We should take plenty of green leafy vegetables, omega-3 fatty acid containing foods, fat fish, nuts. Fifth is adequate hydration. So आजकल क्या हुआ है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं complaining of headache and discomfort in their eyes just because they are not having adequate water. So take plenty of water wherever you go. Carry your water bottle so that to remain hydrated. Then you will see that your eyes will be moist and comfortable. Sixth is 20-20-20 rule. As we know that technology is everywhere. जो भी हम काम कर रहे हैं, we need laptops, we need computers. We have to take online classes, we have to use phones. So, to protect your eyes, there's a simple rule which is the 20-20-20 rule. जब भी आप अपने स्क्रीन पे काम कर रहे हो, after every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds. This will help relax your eyes. Seventh point is for our brothers who work as masons, carpenters, welders. ये जो लोग होते हैं क्योंकि अपने काम के दौरान ये often risk में रहते हैं for eye trauma. So do wear protective eye glasses. जब भी आप अपना काम कर रहे हो तो प्लीज़ protective eye glasses पहन के रहे ताकि आपकी आइज़ किसी भी तरह की इंजुरी से बच जाए. Eighth is avoid rubbing your eyes. जब भी आपको आंखों में खुजली लगे या ऐसा लगे कि आप आंखें रब करना चाहे, instead of rubbing your eyes, you can gently pat on your eyes. आप एक कॉटन पैड ले लीजिए और gently अपनी आइज़ पर टैप कीजिए rather than rubbing it. Eighth is good night sleep. So, good night sleep is very important. It is recommended कि 7 to 9 hours of sleep is very important so that our eyes जो दिन में बहुत थक गई होती है get the rest that they deserve. 10th and the last point is to adjust the display settings. हम आजकल देखते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, हमारे टीवीज़ में, टैबलेट्स में एक ऑप्शन रहता है आई कंफर्ट वाला. You can use that option. उससे क्या होगा? It will auto adjust the brightness और आपकी आइज़ डिस्कम्फर्ट नहीं फील करेंगी. प्लस जो फॉन्ट साइज़ है हमारे फ़ोन का वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको कोई अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं होगा. सो ऑल दीज सिंपल थिंग्स इफ़ वी इनकलकेट इनटू आवर डे टू डे लाइफ then inshallah we'll be on our way to maintain healthy and happy eyes. Thank you so much.